A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum to all of you. Today my topic is airways. Chapter number 7, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. Class 7th subject Geography. Dear students, as you know, आपको पता है कि yesterday we have discussed means of transport, in which we have discussed roadways. इसमें हमने discuss किया roadways and railways. Now today we will discuss airways. आज हम airways के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि प्यारे बच्चों, this is the fastest mode of transportation. It is most effective in difficult terrain like mountains, etc. and during widespread distances, disasters like floods. Widespread disasters like floods, etc. जैसा कि प्यारे बच्चों, this is the fastest ways of transport developed in the early 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads, जहाँ पे न roads and railways. इसके बाद प्यारे बच्चों हेलीकॉप्टर जैसा कि प्यारे बच्चों, helicopters are extremely useful in most inaccessible areas, जैसा कि प्यारे बच्चों, in remote areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. जैसा कि प्यारे बच्चों, some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. जैसा कि प्यारे बच्चों, Frankfurt, a commercial city in western Germany, in the state of Hesse. इसके बाद प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बोला कि important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo, the capital of Egypt. Egypt, a capital of Egypt. A port on the Nile River. Port on the Nile River. इसके बाद प्यारे बच्चों, now we will discuss development of air transport. Air transport. जैसा कि प्यारे, since ancient times, पुराने ज़माने से men have wanted to fly. इंसान चाहता है कि मैं उड़ूं. The first successful flight by aeroplane was made by the American Wright brothers. Wright brothers in 1903. Many developments during the 20th century have revolutionized air transport. उसके बाद प्यारे बच्चों, जैसा कि air transport is the quickest means of transport. It needs no expenditure on the construction of air routes. The construction of air routes, it can cross physical barriers like mountains हैं, oceans and deserts.
and that's, but it is a costly means of transport. Costly means of transport. It is useful for transporting passengers, mails, food supplies, and commodities. Of high value. उसके बाद प्यारे बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर ट्रांसपोर्ट. फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर ट्रांसपोर्ट. पहला फैक्टर जो है वो है एयर route generally follow great circles to fly over the shortest distance. To fly over the shortest distance. पहला फैक्टर जो है वो है एयर रूट जनरली फॉलो ग्रेट सर्कल्स टू फ्लाई ओवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. नेक्स्ट जो है वो है एयर ट्रांसपोर्ट नीड्स क्लियर वेदर. जैसा कि प्यारे बच्चों, लो क्लाउड्स, फॉग, डस्ट है, स्टॉर्म्स एंड स्नो और बिग हैंडीकैप्स. ये इसके लिए बहुत सारी रुकावटें हैं, जैसा कि लो क्लाउड्स है, फॉग है, डस्ट है, स्टॉर्म्स एंड स्नो और बिग हैंडीकैप्स. उसके बाद प्यारे बच्चों, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एरोड्रोम्स नीड लेवल लैंड होना चाहिए. जैसा कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ एरोड्रोम्स नीड लेवल लैंड. उसके बाद प्यारे बच्चों, एयर ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल. Air transport requires huge capital. The air transport needs adequate equipment and machinery. Adequate equipment and machinery. तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही आज का हमारा जो टॉपिक था एयरवेज कंप्लीट होता है. अल्लाह हाफिज.